Good morning. My name is Aid Pandulu. Right, I am recording this video for the purpose of a demo. In this demo, I want to discuss electric field intensity due to uniformly charged hemisphere. Uniformly charged hemisphere at its center. So, how is the hemisphere? How do the charge is distributed? So, what is the electric field intensity at the center of the hemisphere? This one we want to find. So, in this problem, what are the difficulties? What is the easiness? How can we get the solution for the problem? This one we will discuss. So, first we need to understand the problem. पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने का. सो प्रॉब्लम क्या है, इसमें डिफिकल्टी क्या है, ये डिफिकल्टी ओवरकम आने का कोई मार्ग है, राइट? वो मार्ग क्या है, इसलिए इजीनेस क्या है, ये मार्ग में इजीनेस क्या है, इससे आंसर क्या आता, ये है प्रॉब्लम, राइट? सो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने का. प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले आई विल ड्रा द डायग्राम. ये क्या है, ए यूनिफॉर्म हेमीस्फेरिकल ऑब्जेक्ट है. हेमीस्फीयर that means it is a half sphere. So on this hemisphere, over this hemisphere, a charge is distributed uniformly. चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली. इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है चार्ज एक ही रूप से सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ. ए टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द हेमिस्फीयर इज Q, but here the total charge is not the problem, because a distributed charge है, a charge density चाहिए. इसका चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, वो चार्ज डेंसिटी ऑन द हेमिस्फीयर. सो पहले वी विल टेक द चार्ज डेंसिटी ऑन द हेमिस्फीयर. This one is sigma. This one is our assumption, right? Let sigma is the charge density on the hemisphere. So if charge density on the hemisphere is sigma, this is a known value. To find the electric field intensity at its center, center माने तो ये पॉइंट है. इसी पॉइंट से सरफेस को कोई लाइन ड्रॉन करने तो ये है रेडियस. सो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस है. सो all the points on the surface are at same distance from the center. All the points are at same distance, right? Equal distance है. Equal distance है तो कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकता नहीं. कूलम्स लॉ डायरेक्टली अप्लाई नहीं करने का. क्यों? ये डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज नहीं है. ये पॉइंट चार्ज है तो डायरेक्टली कूलम्स लॉ अप्लाई करने का. डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, इसलिए कूलम्स लॉ डायरेक्टली अप्लाई नहीं करने का. सो क्या करने का, ये हेमिस्फीयर को पार्ट्स करने का, स्मॉल पार्ट्स. सो इतना नंबर, इनफाइनाइट नंबर को स्मॉल पार्ट्स करने का. ये ऐसा करने का, राइट? परपेंडिकुलर टू दिस रेडियस, ये स्मॉल पार्ट्स करने का. इधर से इसी पॉइंट से स्मॉल पार्ट्स करने का, राइट? इसी तरह स्मॉल पार्ट्स करने का. ये स्मॉल कितना नंबर, इनफाइनाइट नंबर पार्ट्स करने का. इसी इनफाइनाइट नंबर पार्ट्स में एक पार्ट, राइट? ये जो वन पार्ट, एक ही पार्ट को सेलेक्ट करो. ये पार्ट इसी दूर में, ये पार्ट सेंटर से y दूर में, सेंटर से y डिस्टेंस में एक पार्ट को सेलेक्ट करो. ये पार्ट को सेलेक्ट करेगा. ये पार्ट को सेलेक्ट करने तो ये पार्ट कैसा है, ये पार्ट, राइट? देखने का रिंग जैसा है, ये रिंग जैसा है. वो simple, that ring only I will draw here.
राइट। ए रिंग कैसे देख सकता, ए रिंग ऐसे देख सकता, रिंग है, रिंग ऐसे देख सकता। ए रिंग का रेडियस क्या है, ये रिंग का रेडियस r है, राइट। ए रिंग का रेडियस r है, ए रिंग का थिकनेस dy है। सो इज अ रिंग, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग्स हैं इधर। सो ईच रिंग has an electric field intensity at the point O. So that electric field intensity due to the ring, we know this. So ये मालूम है, electric field intensity due to ring on its axis, ये मालूम है। ये फार्मूला यूज करने के बाद इंटीग्रेशन करने दो, बिकॉज इनफाइनिट नंबर ऑफ रिंग्स है ना, इनफाइनिट नंबर ऑफ रिंग्स का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने तो इंटीग्रेट करना है, ये करने तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू आता। सो पहले एक रिंग सेलेक्ट किया, ये रिंग से पॉइंट वो इतना दूर में है, पॉइंट वो y डिस्टेंस में है, हेंस इट इज एक्सिस, रिंग का एक्सिस है, रिंग का रेडियस है यहाँ, रिंग का एक्सिस में y डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट अलोंग द रिंग एक्ट करने का, राइट। एलिमेंटरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डी बार है, एलिमेंटरी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द एलिमेंट रिंग। सो दिस पॉइंट ओ इज एट ए डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ओ, दिस पॉइंट इज एट ए डिस्टेंस r. This r is equal to, right from the diagram it is easy to say that this r is equal to square root of r square plus y square, r square plus y square. And we need also to define the value of dy, and we also need to define the value of r and the value of y. These three values we need to know. Why we need to know all these three values, right? This is because, right, electric field intensity due to the ring on its axis, the elementary electric field on the axis dE bar is equal to, this one has the formula 1 upon 4 pi epsilon naught dq into y divided by square root of, right, r square plus y square whole to the power of 3/2. ये फार्मूला ऐसे करना का, 1 divided by 4 pi epsilon naught dq into y divided by r cube. In this one dq is रिंग का चार्ज है, एलिमेंटरी चार्ज ऑन द रिंग, ये y एक्चुअल डिस्टेंस है, इसलिए द dq वैल्यू we need to find and y value we need to find. These two values if we know, right, those two values we can substitute in this, then I will get electric field intensity due to elementary ring on its axis, right, at point O. That one if I integrate I will get the electric field intensity due to entire hemisphere. So पहले dq कैसे मालूम करने का, dq है, the value of dq is simply is equal to sigma into dA. ए सिग्मा हेमिस्फीयर का चार्ज डेंसिटी है, dA हेमिस्फीयर का ये नहीं रिंग का एरिया है, dA रिंग का एरिया है। रिंग का एरिया कैसे मालूम, रिंग का एरिया, ये रिंग का रेडियस है r, a surface area of ring, right, it is not actually area of the total ring, a surface area of the ring. So a surface area of the ring कैसे मालूम सकता, इसको मालूम करने का एक मार्ग है, राइट, ये r is its radius, dy is its thickness, ये r रेडियस है ना, इधर कट करने का रिंग को, राइट, इफ वी स्प्रेड लाइक ए लाइन, रिंग ऐसे आता, स्ट्रेट लाइन जैसे आता, राइट, ये इसका लेंथ है 2 pi r, इसका थिकनेस है dy, हेंस एरिया ऑफ द रिंग है, राइट, 2 pi r dy, and the charge in the ring है 2 pi r dy into sigma,
a charge of the ring. Right, by using this value, I can find the electric field intensity at the center of the hemisphere. Still there is one thing. What is the thing is, what is the value of this R? ये R unknown है, ये Y भी unknown है. For finding this, there is a one easy way. ये way क्या है? ये angle be theta. Let this angle is theta. And this is R. This angle is 90 degrees. So ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल से थीटा का वैल्यू आता, राइट. सो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R sin थीटा, बिकॉज इट इज ऑपोजिट साइड है, इसलिए y वैल्यू इज एडजेसेंट साइड है, इसलिए इट इज कैपिटल R cos थीटा. एंड व्हाट अबाउट द dy, right? Simply join this line with this one, right? And this angle is d theta, suppose elementary angle d theta, and this is also R. Then this length is equal to sector length. Then d theta is simply from the d theta, the sector length dy is equal to R d theta. If I substitute all these values in this, I can find the electric field due to the ring at point O. The elementary electric field due to the ring at point O, dE bar, this one is always along its axis, is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught dq into y divided by capital RQ. This one is 1 upon 4 pi epsilon naught dq. What is dq? dq is equal to, right, this simply I can write like this, 2 pi r dy, 2 pi r dy into sigma upon r cube, ये एलिमेंटरी इलेक्ट्रिक में. इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का, r का वैल्यू, dy का वैल्यू, या y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का. ये सब्स्टिट्यूट करने तो राइट डी बार का वैल्यू आएगा, वो डी बार का वैल्यू को इंटीग्रेशन करने का विद इन द लिमिट्स. ये लिमिट्स क्या हैं? लिमिट्स हैं इधर से, राइट, ये स्मॉल रिंग्स इधर से इधर तक कट करने का. इधर से इफ आई स्टार्ट एट दिस पॉइंट, द एंगल इज 90 degrees. If I end at this point, the angle is 0. Hence the integration limits are from 90 to 0 degrees. This we will discuss again. First we will find this value. This is 1 divided by 4 pi epsilon naught. Right, 2 pi times r. ये r का वैल्यू है कैपिटल R sin थीटा, कैपिटल R sin थीटा. dy का वैल्यू है r d थीटा, r d थीटा, राइट. सिग्मा y के वैल्यू है r cos थीटा, r cos थीटा होल डिवाइडेड बाय r cube. So in this one, r cube is in numerator, r cube is also in denominator. ये 2 पाई है, ये 2 पाई, ये 4 पाई में 2 बार कैंसिल होगा, राइट. कैंसिल होने तक, राइट, ये क्या मिलेगा? ये 1 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल, राइट. इंटीग्रल नहीं है, साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, राइट. ये है एलिमेंटरी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रिंग. ऐसे वाले रिंग्स हैं इनफाइनाइट नंबर का, इसलिए फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द हेमिस्फीयर इज इंटीग्रल ऑफ द एलिमेंटरी इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द लिमिट्स. So the rings can be made from this point to this point. If I start at this point, the angle is 90 degrees. If I end at this point, the angle is, right, the angle is, if I end at this point, 0.
Hence the integration limits are from pi by 2 to 0. So this one is sigma by 2 epsilon naught integral sin theta cos theta d theta within the limits pi by 2 to 0. But integral of sin theta cos theta do theta, what is the value of this? If you want to find the value of this one to be multiplied with 2, then I am writing, right, 2 sin theta cos theta. If I want to write, I should divide with 2. Then this becomes 4 epsilon naught. Integral 0 to pi by 2, 2 sin theta cos theta into d theta. Then the electric field intensity value becomes sigma by 4 epsilon naught integral 0 to pi by 2 sin 2 theta d theta. Integral sin 2 theta is minus cos 2 theta by 2. Hence the electric field intensity is equal to, what is the value of electric field intensity? This electric field intensity is equal to, just equal to, how much is? Electric field intensity E bar is equal to sigma divided by 4 epsilon naught cos 2 theta divided by 2 within the limits. What are the limits? The limits is 0 to pi by 2, but integral sin 2 theta is minus cos 2 theta. That's why it is minus cos 2 theta by 2. So the electric field intensity value becomes sigma divided by 4 epsilon naught cos 2 theta. This cos 2 theta I want to replace with the values, upper limit first. Cos 2 into pi by 2 minus cos 0, right, by 2. This by 2 we can write outside. So if we write this one here, it is sigma by 8 epsilon naught. Cos into 2 pi by 2, right, minus 0, it is minus half. So minus sigma by 8 epsilon naught cos pi is equal to minus 1. Then I will get the final value of electric field is sigma by 4 epsilon naught. So hence, right, the electric field intensity at the center of hemisphere this value is electric field intensity at the center of hemisphere. This value E is equal to, right, we will get finally the value sigma divided by 4 epsilon naught, where sigma is the surface charge density on the hemisphere, right. This one is the electric field intensity on the surface of the hemisphere. So we can find like this, right, from dividing the hemisphere into small rings and integrating all the rings together. Then we will get the value sigma divided by 4 epsilon naught. Right? This